Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about course of environmental chemistry. Now we discuss the most important topic is analysis of plant material. Introduction. Not only plants do serve as source of nutrition for animals and humans, they play a myriad of other roles fundamental to the environment and society. प्लांट सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ही नहीं बल्कि इनके अनगिनत काउंटलेस रोल्स हैं. Plants provide an essential link between atmosphere and terrestrial ecosystem. Plants एटमॉस्फेयर एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के दरमियान एक एसेंशियल लिंक प्रोवाइड करता है विद बोथ बेनिफिशियल एंड पोटेंशियली हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस. थ्रू photosynthesis, plants fix in organic carbon dioxide from the atmosphere and convert it into organic matter, which can be used as a source of energy by plants. Animals and humans, whilst at the same time replenish the air with that most vital substance of all, oxygen. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. फोटोसिंथेसिस में प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड एनर्जी होती है फॉर द सेक ऑफ प्लांट्स. इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इसकी फोटोसिंथेसिस की जो केमिकल इक्वेशन है वो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 वाटर मोलिक्यूल्स विद सनलाइट जब रिएक्ट करते हैं तो C6H12 और 6 ग्लूकोज का मोलिक्यूल बनता है जो कि एनर्जी है एंड 6 का ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स बनते हैं और ये ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर को रिप्लेनिश करती है एयर को ऑक्सीजन के साथ. The primary production is the source of the food on which all animals including humans are dependent. Organic matter can be used to produce energy required for various essential activities, reproduction, growth by living organism through respiration. पौधों का बड़ा अहम रोल जो है वो सोर्स ऑफ फूड है. रेस्पिरेशन की इक्वेशन है C6H12 और 6 जब रिएक्ट करते हैं 6 ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स के साथ तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल्स बनते हैं एंड 6 वाटर के मोलिक्यूल्स एंड 7 एनर्जी हमें जो है वो मिलती है. इंस्पायरेशन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बैक टू द एटमॉस्फेयर thus balancing the chemical action of photosynthesis. This equilibrium forms the basis of the main nutrient cycle in the biosphere. The carbon cycle terrestrial plants together with their aquatic counterparts, namely phytoplankton, play a vital role in maintaining conditions on the earth that are conducive to life. Phytoplankton supply approximately 75% of the oxygen in biosphere while land-based plants provided the remainder. एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्लांट्स एंड सेकंड है एक्वेटिक प्लांट्स. जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये 75% ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं एटमॉस्फेयर में और इसके अलावा जो रिमेनिंग जो है वो पार्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वाले प्लांट्स इसको प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन को. जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं आबी पौधे इन्हीं को फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं. Civilization तहजीब as we know it arose when humans firstly learned to utilize plant growth for their needs by mass cultivation of crops, and to this day agriculture remains the most essential of all activities ensuring the continued survival of our race. Furthermore, we have the plants to thank not only for meeting our biological energy requirements but also those of our modern society. The massive amounts of energy used up daily throughout the world are almost exclusively provided by that were once living plants. तहजीब का आगाज़ जब हुआ था जब इंसान ने फसलों को उगाना सीखा था और आज हमारे यहाँ क्या किया जाता है जो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं जिनकी वजह से हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होती हैं हम उन्हीं लोगों को देहाती समझते हैं बल्कि इन्हीं लोगों की वजह से हम आज जो खा पी रहे हैं ये जो नेचुरली हमारी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से पूरी होती हैं. इसके अलावा आजकल जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लॉन्ग डेड प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म सप्लाई अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी. जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोल वगैरह हैं ये हमारे पौधे ही हैं जो पूरा करते हैं. ये पौधे बड़े जब हो जाते हैं ज़मीन में तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर हवा का होता है और वो फॉसिल फ्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं.
Environmental problems हैं. Many of today's environmental problems are closely linked with plants. The very combustion of fossil fuels over the plants 150 years ago has released into the atmosphere huge quantities of carbon dioxide, which had taken nature millions of years to convert through the photosynthetic action of plants and other biochemical process from atmosphere carbon dioxide into coal, oil, and gas. 150 साल पहले तक जब पेट्रोल फ्यूल कारें नहीं थीं तो हमें उन सब प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि फॉसल फ्यूल्स की कंबस्शन बढ़ गई है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ह्यूज क्वांटिटी पैदा होती है, जो कि एक प्रॉब्लम है. By simply comparing the timescales of anthropogenic and natural process, one cannot escape the conclusion that it is only a matter of time before nature's delicate balance is broken. Agriculture practices themselves are responsible for numerous environmental problems. एंथ्रोपोजेनिक जो प्रोसेस होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें इंसान इन्वॉल्व होता है. Plants may act as a vehicle for transferring pollutants into the food chain. प्लांट्स में जो पोल्यूटेंट्स ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू फूड चेन के ज़रिए, इसमें वो एक्शन होता है उनका. फॉर एग्जांपल, कैडमियम इज़ रेडली accumulated by plants and levels which may not be harmful to the plants themselves could pose a significant threat to animals and humans that consume plants. The latter is of great concern to public health authorities since pollutants which enter the food chain can eventually affect human health. ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं. जंगलात की कमी यानी जब आग लग जाती है पानी के अंदर, अगर फर्टिलाइज़र्स फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फॉस्फोरस डाल दें तो इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है. इनकी ग्रोथ में इजाफा होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कुछ पौधे और मछलियाँ वगैरह इससे मर जाती हैं. जो डेजर्टिफिकेशन हम इसको कहते हैं, यानी बंजर हो जाना. Heavy metals and pesticides are major pollutants in this respect, although persistent chlorinated hydrocarbons, which are stable to chemical breakdown, have been banned in most developed countries. Many developing nations still continue to use them. Direct effect of air pollutants on plants can vary from subtle to severe depending on. इसमें आता है नेचर ऑफ पोल्यूटेंट, प्लांट स्पीशीज, concentration of pollutant, expiry time. There is also variation in sensitivity within plant species depending on the environmental condition. Phototoxic air pollutants include sulfur dioxide, nitrogen oxide, ozone, PN, and formaldehyde. Both acute and chronic effects have been observed. Acute and chronic effect होते हैं. इनकी वजह से फर्दर मोर टू और मोर पोल्यूटेंट्स में एक्ट एज कम्बिनेशन टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट देन दी सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट इन वट इज़ नोन एज साइनर्जिज्म. फोटोटॉक्सिक मीन्स होता है जो पॉइजनस होते हैं फॉर प्लांट्स. अगर पोल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिल जाए तो इनका इफ़ेक्ट होता है. इस इफ़ेक्ट को साइनर्जिज्म कहते हैं. Greenhouse gas emission of methane from rice fields and cattle farming. डेजर्ट डिफॉरेस्टेशन होती है, जंगलात का आग लग जाना. यूट्रोफिकेशन होती है, एसिडिफिकेशन होती है. डेजर्टिफिकेशन बाय पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो टॉक्सिक होते हैं फॉर प्लांट्स के लिए. Plants and pollution have pollutants can impact on plants from the atmosphere, as in the case of sulfur dioxide injury to leaf or through the roots of plants, as in the case of soluble aluminum. Plants pollution is of concern of two reasons. इसके two reasons हो सकते हैं. Pollutants may have direct or indirect phototoxic impact on the plants themselves, leading to a decline in crop yields and threatening our food supplies. For example, sulfur dioxide pollution may cause chronic and acute injury to plants. Plants analysis. A plant analysis is determination of chemical substances in a specific plant part. Substances determined in plant analysis include macronutrients, micronutrients, pesticides, heavy metals, pollutants.
Sampling and sample preparation. Obtaining a plant tissue sample which is representative of the general pollution is both important and difficult. General field variation of biological materials greatly exceeds and introduced during analysis in the laboratory. Major considerations when planning a sample strategy are which plant part or to sample, कौन सा प्लांट का पार्ट है जिसको हमने सैंपल करना है, व्हेन टू सैंपल, सैंपल कब लेना है, विच केमिकल सब्सटेंस टू डिटरमाइन, कौन सा ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको हमने डिटरमाइन करना है। प्लांट पार्ट क्या होता है, द सिलेक्शन ऑफ द प्लांट पार्ट फॉर एनालिसिस इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द एम्स ऑफ द स्टडी एंड द टाइप ऑफ प्लांट। फॉर small herbs and grasses, it is often sufficient to sample the entire aerial growth, but large species may require sampling of leaves or other tissues. For monocotyledons, it is recommended to sample the leaf blade above the sheath junction. The continuous growth of leaves is often an adequate indicator of nutrient or pollution status for woody species. Time of sampling. Time of sampling is crucial because nutrient level in all active plant tissues fluctuate with time. Different sampling times for different elements are rarely practical. Nutrient variation and sampling recommendations for tree leaves are given below. Diurnal and seasonal. Diurnal क्या होता है? The best time to sample trees is around May and seasonal क्या होता है? Changes in concentration are generally due to movement of nutrient into a component during growth and movement in the opposite direction when senses aging approaches, although individual nutrient differ in the mobilities. ये था प्लांट एनालिसिस जिसमें डिफरेंट टर्म्स थी और जिनको हमने डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किस चीज़ की समझ ना आया कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।